Hi everyone. So guys, let's wait for another 2-3 minutes. उसके बाद फिर हम start करेंगे. I So yeah, hi everyone. Welcome to this Saturday live session on Fraternity Instagram page. सबसे पहले तो मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगा जिन्होंने इस लाइव सेशन इनिशिएटिव को काफ़ी प्यार दिया और हमें आप लोगों के काफ़ी मैसेजेस भी रिसीव होते हैं दैट यू आर लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम ऑल दीज लाइव सेशंस. सो वी विश कि ये चीज़ें ऐसी कंटिन्यू रहे. Talking about today's live session, we have another special guest, Umang Gupta, जो आज हमारे साथ join करेंगे. Talking about Umang is an All India rank in IPCC. He got All India rank 31. उसके बाद he got All India rank 3 in finals as well. And post finals, he joined Marico in the coveted management training program. और सब चीज़ अच्छा चल रहा था. But he left Marico and he went to IIM Bangalore to pursue his PGP program. So basic key takeaways जो मैं चाहूँगा कि हम सब मिलके इस सेशन से सीखना चाहेंगे वो यही है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि वन शुड टेक इनटू कंसिडरेशन ये डिसाइड करने के लिए इवन आफ्टर डूइंग CA फॉर सो लॉन्ग उन्हें MBA करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. So without wasting any time, let's take Umang live now. Yeah. Hi, Domal. Hi Umang. Hi Umang, how are you? All good. Thank you. सबसे पहले तो Umang, thank you so much टाइम निकालने के लिए. Yeah, my और pleasure. Thank you for having me. Thank you. So Umang, first of all, let me tell you two important things जो हम लाइव सेशन में ख्याल रखेंगे. One is I want you to be as candid as possible. Yeah. Think कि हम सभी juniors हैं यहाँ पे और we want something out of this live session. Sure. And second thing, for all the audience, we would divide the whole live session into two parts. In the first half, मेरे पास कुछ questions मैंने prepare किए हैं. वो questions मैं उमंग से पूछूंगा और second half में we will try to take up your questions. और जिन्होंने भी live session join किया है, I want to tell them that there's a question tab mark below your screen. वहाँ पे आप अपने questions put up कर सकते हो second half में. Okay? So yeah, Umang, starting with my questions, the very first question would be, tell us something about your initial journey. ये CA वाला जो कीड़ा था वो कहाँ से start हुआ? So I think I didn't like science at all, so that was completely out of question. Then बचता क्या है commerce and humanities. अब commerce में भी there are two options, CA and rest of the other things. तो बाकी CS हो गया, CFA, CS हो गया, ICWA हो गया. These are all मतलब CA के सामने कोई मुकाबला नहीं है. So there are only two things, either CA or nothing. So I think commerce लिया है तो CA is like one of the most important course to be very honest. मतलब जितना value CA का है market में, I don't think any other course demands that much prestige and that much recognition in the market. So CA was the natural choice after taking commerce. So that's how I got into it. And Umang, you even joined the regular college मुंबई में. So वो regular college के साथ साथ decision लेना CA और CS का वो कितना tough था और वो manage करना वो days हम थोड़ा deep dive करना चाहेंगे उन दिनों में. So I think I would like to divide the college days into two parts. So the first part would be when you're giving your IPCC. So I think first 1 year you don't really take part in a lot of college activities. You try to focus on your IPCC. But once your IPCC is done, when you move into your SY BCom or your TY BCom, you don't really have a lot of stress. You've got finals coming up after 2 years. So at that time you can enjoy college life, take part in many festivals, take part in some clubs or committees, because these are the days you'll actually remember. बाकी तो पढ़ाई में तो I mean
these are you won't enjoy at all. So I think फर्स्ट ईयर में आईपीसीसी पे फोकस करना चाहिए एंड बाकी 2 साल में यू कैन प्रॉब्ली ट्राई टू लिव योर कॉलेज लाइफ. So from a attendance perspective, in Mumbai University, except NM or a couple of colleges, there's no attendance ka issue per se. So I think that was not really a major hindrance. But I would suggest all the juniors to take some time out and attend at least the college festivals or some of the college clubs and committees, because you really enjoy at those times. इवन उमंग, जैसा सीए फेटर्निटी में देखा जाता है, जूनियर्स इवन आफ्टर गेटिंग इनटू अ रेगुलर कॉलेज वो उस रेगुलर कॉलेज का इस्तेमाल अच्छे से कर नहीं पाते हैं. दे आर स्टिल बिजी इन परस्यूइंग सीए कोचिंग्स एंड ऑल. सो वहाँ पे आप क्या एडवाइस करना चाहोगे जूनियर्स को, कि वो क्या 2-3 हैक्स आप बताना चाहोगे, ये 3-4 चीजें हैं जो हमेशा ध्यान रखे बिफोर एंटरिंग अ कॉलेज एंड उसके साथ कोई भी प्रोफेशनल कोर्स परस्यू करना है तो. So I think priority is the key. I mean हर एक चीज का टाइम होता है. So प्रॉब्ली जब एग्जाम पास है तो आई वोंट से कि एग्जाम का पढ़ाई मत करो, कॉलेज में जाके फेस्ट में जाओ, बट देन यू नीड टू प्रायोरिटाइज थिंग्स एंड यू नीड टू नो कि कब क्या करना है मेरे को. सो आई थिंक प्रायोरिटी इज द नंबर वन थिंग. Okay. So, Umang, after coming in your IPCC phase, whichever exam you gave, you put or left a mark on it. आपका IPCC में रैंक था, then talking about finals, वहाँ पे भी रैंक. You even gave CS executive. You also got AIR 3 in CS exams. So, yeah. what was that what was that secret? क्योंकि हम नॉर्मल किसी भी सीनियर से बात करते हैं, जैसे रैंक आता है तो वो नॉर्मल चीजें बता देते हैं हमें कि वही हार्ड वर्क करना है, चीजें अच्छे से पढ़ो, रिवाइज कर लो. बट एवरी टाइम अ रैंकर गेट्स अ रैंक, उसको दोबारा जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है. तो वो क्या क्या चीजें जिसका आप हमेशा ख्याल रखते हो जो आपको इतना मतलब अच्छा परफॉर्म करने में काफी हेल्प कर जाता है? So I think firstly the right material. You know what I see people doing is they'll take 10 coaching classes material and try to study everything. So they try to go for breadth. I would say go for depth. You start with the ICI material and do it अच्छे से. So I think that is one difference in approach, breadth versus depth. So you don't need to study 10 different sources. एक जो सोर्स पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ो, 4 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो. So I think ICI का मटेरियल यूज करना चाहिए, बिकॉज द कोर रीजन बीइंग पेपर ICI बना रहा है, चेक ICI कर रहा है, एग्जामिनर्स ICI के हैं, सजेस्टेड ICI बना रहा है. सो व्हाई नॉट यूज द ICI मटेरियल, एंड ICI को पसंद है वही लैंग्वेज जो उनके मॉड्यूल में लिखा होता है. सो आई थिंक ICI मटेरियल शुड बी प्रेफर्ड. दैट इज वन थिंग. एंड द सेकेंड थिंग इज प्लानिंग पार्ट. सो लोग बहुत मेहनत करते हैं, बट देन होता क्या है कि ऑन द लास्ट डे दे डोंट गेट एडिक्वेट टाइम टू रिवाइज द एंटायर पोर्शन. सो वो रिवर्स प्लानिंग करना चाहिए. लाइक व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी सब्जेक्ट यू शुड keep in mind that what all do I need to study in the last one day before the exam. So you get around 18 hours probably to revise before every exam. So you should have that plan ready. So probably by reverse engineering, by reverse calculation, वो प्लानिंग पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर स्टडिंग. एंड देर आर ABC एनालिसिस करना चाहिए, लाइक इट इज सेड पैरेटो एनालिसिस है. कोई कोई टॉपिक होते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, कोई कोई टॉपिक होते हैं जो छोड़ भी सकते हैं. सो आई थिंक वो पास्ट ट्रेंड एनालाइज करके यू शुड नो कि मैं क्या स्किप करूं, क्या पढ़ लूं. And even if you're skipping some topic, you can probably try to mitigate your risk by studying some questions from the practice manual or from the study material. So I think that is the entire strategy which one should make. Okay. वो स्मार्ट अप्रोच काफी हेल्प करता I है. think, yeah, so smart work along with hard work. Only hard work is not important. Now, Umang, coming on your articleship phase, articleship आपने कॉलेज के साथ स्टार्ट किया था या फिर बाद में स्टार्ट किया था? कॉलेज के स्टार्ट किया था. Okay. So how you approached articleship? वो क्या क्या चीजें जो आपने ख्याल रखा articleship में? When I was researching about your journey, I got to know you did your first year of articleship from KPMG, and Yeah. then you shifted to a small firm or some Right. other firm. So how you made that decision? वो क्या factors थे जो आपको Big Four join करने में अपने दिमाग में रखा था, और later on when you left KPMG, what were those factors? So I think if given an opportunity, everyone should try to go for a Big Four, because the scale of clients that you get, the creme de la creme people you meet,
you get an exposure of the corporate culture, which is completely missing in most of the mid-sized firms. So I think Yeah. Big Four one-time experience to होना चाहिए. Like if given an opportunity, you should of course join a Big Four, because जो learning वहाँ पे होती है, I mean the audit methodology, the technical tools which they use, they literally apply all the standards of auditing. मतलब जो हम लोग audit में पढ़ते हैं वो practically Big Four में apply होता है. So I think that is one big thing about a Big Four. So if given an opportunity, Big Four join करना चाहिए. And why did I move to a mid-sized firm? Because I wanted exposure to other aspects also. So in Big Four, I was only on one client, and every quarter I was doing audit of that particular client. So in a mid-sized firm, I got more exposure, more industries audit. I got bank audit, trust audit, NGO audit, then अपना income tax, GST, and everything. So mid-size में it's like a थाली system. You get to do everything in a mid-size firm. मतलब हर एक चीज का थोड़ा थोड़ा टेस्ट मिल जाता है. So I think mid-size के वो फायदे हैं. So both of them have pros and cons. But I think if given an opportunity, Big Four अगर मिलता है तो join कर लेना चाहिए. I mean the at least एक साल तो करना चाहिए. Probably बाद में अगर if you have certain problems, you have to stay in a different city or something, then probably you can shift to your hometown post 1 year. But I think one time experience तो करना चाहिए everyone at Big Four. ओके ओके. एंड इवन जो आपने ये थाली वाला सिस्टम कहा कि आपको सभी एरियाज का एक टेस्ट मिल जाता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूचर में आपको एक अच्छा डिसीजन मेकिंग कि आपको किस करियर पाथ पे जाना है फॉर अ लॉन्ग टर्म, राइट. वो काफी हेल्प करता है. स्पेशली अगर आपको प्रैक्टिस करना है फ्यूचर में या बिजनेस करना है, तो आपको ग्राउंड लेवल पे दिखता है कि क्या हो रहा है. बिग फोर में आप एक छोटे हार्ट की सर्जरी कर रहे होगे या बॉडी के एक पर्टिकुलर मसल की सर्जरी कर रहे होगे. इन अ मिड साइज फर्म यू विल गेट टू सी द एंटायर बॉडी. सो आपको पूरा पूरा ह्यूमन बॉडी दिखेगा, आपको हर एक चीज दिखेगा. आप हर एक चीज का मतलब हो सकता है आपको पूरा सुपर स्पेशलिटी नहीं होगा. यू विल बी अ मास्टर ऑफ यू विल बी अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इन अ मिड साइज फर्म. मतलब आपको हर एक चीज आएगी. आपको बोलेंगे कि ये कर दे तो आपको एटलीस्ट मोटा मोटा आइडिया होगा. लेकिन अगर मैं बिग फोर ऑडिट वाले को बोलूंगा कि मेरा जीएसटी रिटर्न भर के दे, so he won't be able to do that. So Big Four is something, a concept of super speciality versus a completely generalist concept in a mid-sized firm. So वो ये दोनों के pros and cons हैं. उमंग, मे बी आपके साइड से कुछ नेट इशू आ रहा है. गाइस, कैन यू वंस कंफर्म? गाइस, कैन यू वंस कंफर्म इन द कमेंट सेक्शन नेट इशू है या नहीं? Yeah, या उमंग, इट्स बेटर नाउ. sorry. Yeah. या. सो उमंग, नाउ कमिंग ऑन योर फाइनल्स, आपने फाइनल्स का जो प्लानिंग स्टार्ट किया था, दैट वाज समथिंग व्हिच यू जस्ट स्टार्टेड व्हेन यू स्टार्टेड योर आर्टिकलशिप, और इट वाज लाइक यू डिड सम मिस्टेक्स देयर एंड देन लेटर ऑन रियलाइज कि नहीं अब तो स्टार्ट करना चाहिए? Right. How was that 3 years? So I think क्लास में like I would only suggest कि क्लास में जो पढ़ा रहे हैं वो ध्यान दो. Like during the initial phase you should pay attention in class and try and revise the stuff once. मतलब उससे फायदा ये होता है कि एक बार आपको when you start your preparation leave you won't be at sea completely. मतलब जनरली अभी होता क्या है, 5 महीने बचे होते हैं और बोलते हैं अरे बाप रे 8 सब्जेक्ट है, कुछ नहीं आता मेरे को. तो वैसा 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 सिचुएशन ना हो. सो द अर्लियर यू स्टार्ट द बेटर. तो क्लास में जो पढ़ा रहे हैं आई थिंक घर पे जाके एक बार रिवाइज कर लो. आई एम नॉट सेइंग कि 12-12 घंटा पढ़ो, बट ड्यूरिंग द फर्स्ट इनिशियल फेज ऑफ योर फाइनल प्रिपरेशन you should at least revise what is being taught in class at least. and weekends में थोड़ा revise कर सकते हो. मतलब you can just keep on doing those concepts again and again. and बाकी last 5 months I think दबा के पढ़ाई करना है. I mean there's no alternative. I think last 5 महीने 5 months is minimum time period for preparation in CA final. मतलब कोई कुछ भी बोलता है 1 महीने में हो जाएगा पढ़ाई, या 10th से इजी है, 12th से इजी है, बट वैसा नहीं है. 5 महीने रिगरस पढ़ाई चाहिए फॉर क्लियरिंग सीए फाइनल इन फर्स्ट अटेम्प्ट. सो And लास्ट उमंग, 5 आपने मंथ्स. जैसे क्लासेस, या हाँ. क्लासेस आपने कब से लेना स्टार्ट कर दिया था? इट वाज समथिंग जो आपने स्टार्टिंग से किया था या फिर सेकंड ईयर या थर्ड ईयर से? So I started my classes quite early. So I finished my classes like 6 months before the exam, so that in the last 6 months I can completely devote my time to self study.
I think that becomes a very important factor. If during the last 3 months you are still wasting, not exactly wasting, but spending your time learning something which is completely new, so I think that eats up a lot of your preparation time. True, true. एंड उमंग, हमने मॉर्निंग में स्टोरी पे पोल डाला था, वहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर टाइम हमारी लाइफ सेशन में आता है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दैट इज समथिंग जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट डिसीजंस है आर्टिकल्स के लिए, तो आप उस पर आपका क्या टेक होगा? So I think more than industrial training, what students should focus is getting a CA final rank. Because to be very honest, जो packages rankers को मिलते हैं, जो job opportunities rankers को मिलती है, there are a lot of companies like HUL, PNG, Aditya Birla Group, Reckitt Benckiser, all these marquee consulting companies like the BCGs and McKinsey, Bain. All these have their shortlisting criteria, and the first criteria is CA final rank. So if you don't have a CA final rank, they won't even shortlist your CV. So more than anything, I would suggest all the aspirants to try and get a CA final rank, because the opportunities which a ranker gets are plenty as compared to a normal person who's cleared in the first or the second attempt. So I think a rank is very important as compared to an industrial training. Industrial training and Big Four articleship baat ki baat hai. First criteria is a CA final rank. So I think that is very important. And even if you see the packages, rankers are paid 1.5 or 1.6 times as compared to non-rankers. So I think, of course, that disparity isn't unfair, but jo hai so hai. So I mean, what you can do is try and achieve a rank and be in the elitist of the elite who get the best of the best opportunities. True, Umang. And then you cleared your finals with CA All India Rank 3. How was that feeling? So that was Describe करना चाहो। completely, yeah, that was completely unexpected, but I was definitely expecting a rank because 5 महीने effort पूरा मारा था. Like मैंने मोबाइल सब छोड़ दिया था. Like I quit all the social media and all. So effort पूरा मारा था. So I was sure कि rank वैंक आएगा. But yeah, third was completely out of the blue, was completely unexpected. And मतलब सोने पे सुहागा था. But rank तो था, I was quite sure. उमंग, एक चीज मैं आपसे और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, वो जो 5 मंथ्स का प्रिपरेटरी लीव था, उसमें एग्जैक्ट जब आप प्रिपरेटरी लीव में जाते हो उस समय आपका माइंडसेट कैसा होता है? हाउ यू प्लान आउट द थिंग्स? काफी स्ट्रेस होता है कि नेक्स्ट 5 मंथ्स सिर्फ मुझे पढ़ना होगा, तो थोड़ा डीप डाइव करके आप बताना चाहोगे कि एग्जैक्टली कैसा माइंडसेट रखना चाहिए, कितने दिनों में हमें प्लान कर लेना चाहिए, टेक 5 मिनट 5 डेज और 6 डेज, और देन फिर उस 5 मंथ्स को अच्छे से यूटिलाइज कर पाओ? पूरा डीप So डाइव करके अगर आप बताना So चाहो। probably I think you should start with a practical or a theory subject ka combination. So something like a FR with a law. So you can just try and study both of them in one day. So kabhi aap when you're fresh, you can study with your theory subject. But raat ke time when you're already exhausted, you can move on to a practical subject. So I think ये theory practical का mix काफी important है. Then you should try and complete like हर सब्जेक्ट को 15 दिन और लेना चाहिए. लाइक 20 दिन में, लाइक यू कैन टेक 20 days, तो यू शुड ट्राई एंड कवर 2 सब्जेक्ट्स इन 20 days, 1 theory and 1 practical subject in 20 days. So ऐसे करके 8 subjects in probably 80 days. So I think that is a good enough timeline for first revision to be done in the 5 months. And बहुत बार होगा you'll feel demotivated कि यार बस ना कितना पढ़ना है. But I think that is वन टाइम का वनवास. आई कॉल इट वन टाइम का वनवास. लाइक 5 महीने का वनवास है. एंड देन फुल पूरी लाइफ में कभी पढ़ाई नहीं करनी. मतलब इफ यू नॉट परस्यूइंग एनी हायर एजुकेशन, कभी बुक्स नहीं उठानी. लाइक दिस इज योर लास्ट एग्जाम ऑफ योर लाइफ. फिर कभी कोई एग्जाम नहीं देना, कभी बुक्स नहीं पढ़नी. सो आई थिंक इट इज वर्थ द एफर्ट. और जो सेटिस्फैक्शन मिलता है बाय व्हेन योर पेरेंट्स सी एंड से कि यार सीए बन गया, और जब आप वो रिजल्ट का बटन दबाते हो सीए फाइनल का और पास पास लिखा आता है, तो वो फीलिंग के लिए ये सब कुछ वर्थ इट है. मतलब आपको अभी लगेगा कि यार इतना पढ़ रहा हूँ, बट व्हेन द रिजल्ट्स कम एंड व्हेन यू एक्चुअली क्लियर, तो वो सेटिस्फैक्शन मतलब वर्ड्स में बोल नहीं सकते, इतना सेटिस्फैक्शन होता है. तो आई थिंक इट इज वर्थ इट. पूरा एफर्ट पूरा डालना चाहिए. एंड का बहुत बार होगा ऐसा. सो मतलब द आइडिया इज जस्ट टू
hang on, मतलब हार नहीं माननी, डटे रहना है. So the CA final journey is like walking into a jungle. There'll be a lot of obstacles, और यहाँ से ये हो रहा है, वो हो रहा है, शेर आ रहा है, वो आ रहा है, but you need to just keep on going, keep on going, keep on going. मतलब ऐसा निडर हो जाना है, हाँ ठीक है अभी तो मेरे लगने ही वाले हैं, हाँ ठीक है मेरे से नहीं होने वाली पढ़ाई, बट यू डोंट हैव टू गिव अप, गिव अप, गिव अप, एंड सडनली पता चलेगा अरे यार मैंने इतना मोटा DT का 4 मॉड्यूल खत्म कर दिया, पता भी नहीं चला. So I think हो जाएगा, you just have to continue going and you don't have to give up. एंड अमंग लाइक आपने आपने कहा कि आपने क्लासेस काफी पहले स्टार्ट कर दिया था आर्टिकलशिप में. सो वो एक इशू नहीं है आपको कि सब्जेक्ट से बिल्कुल ही वो छूट चुका है, बिल्कुल भी टच में नहीं हो आप? देन हाउ यू रीस्टार्टेड एवरीथिंग? So I think revision बार बार करते रहना चाहिए. Like when in a city like Mumbai, when you're traveling in local trains, you know, you're spending 2 odd hours one way to reach to your article chip firm. So probably at that point of time you can skim through your class notes, or you know you can read, you can view a revision video of some professor. So वो 30 मिनट में वो चैप्टर रिवाइज करवा देते हैं प्रोफेसर, तो एटलीस्ट कंसेप्ट का ग्रास्प रहता है. सो एक पता रहता है कि हाँ ये कंसेप्ट है, इस चैप्टर के अंदर ये 10 टॉपिक है. तो आई थिंक बार बार रिवाइज करना इज द की टू यू नो कीप इन टच विद ऑल द सब्जेक्ट्स. That's really cool, Umang. Now coming on the second part of your journey, post CA journey, you attended the MDP program, जो कि जो न्यू MDP प्रोग्राम है जो ICAI ने लॉन्च किया है. दैट इज वेरी हेल्पफुल, और काफी सीनियर्स ने, जिससे हमारी लास्ट लाइव सेशंस हुए थे, उन्होंने भी काफी पॉजिटिव चीजें बताई. उमंग, we want to know कि what MDP program is all about and how it helped you to like got into Marico, और Marico was something जो आपने बाहर से ऑफ कैंपस किया था या MDP से किया था? First, we So can yeah, discuss about MDP. yeah, so MDP is basically a program started by ICI to bridge the gap in communication skills and the networking opportunities which a CA lacks. Because CA is a correspondence course, we don't get to study together or and have the college life. So that is just a 3-week program to bridge those gaps. So in this 3-week program, it's like a mini MBA, you know, wherein we are given case studies, and there's a lot of peer-to-peer learning. You discuss a live case problem which your actual company is facing with your peers, and you've got faculties who are very renowned people from the biggest B schools of the country. So I think it's a very good initiative by ICI. And post the MDP program, there's also a pre-placement, like that's an additional placement which in over and above the campus placement. So वहाँ पे भी बहुत awesome companies आती हैं, like the best of the companies आती हैं, and the average CTC and all is also amazing. So that is, so the rankers get one more opportunity to secure a job apart from the normal campus placements. So rankers के लिए, as I said कि CA final rank का, this is the importance of the CA final rank. You get 2 opportunities to secure a job. अगर आपका MDP में भी नहीं हुआ, you are still allowed to sit in the normal campus. So I think rankers का यही है कि all these companies which are exclusively for rankers would come in the MDP and they won't come in the normal campus. And among what are the profiles they offer in MDP? That is something related to management, या फिर profiles completely वही होते हैं जो normal off campus में offer होता है? So I think profiles would be diverse, but there would be many profiles related to a management trainee program. A couple of, so I would name the companies. If I had to name the companies, there would be somewhat like a Flipkart or a Titan or a Godrej. So I think companies from an industry perspective काफी diverse है, but from a profile perspective, it is mostly related to finance, accounting, taxation. Cool. So how was your overall experience? Like MDP was something जहाँ पे rankers को एक option मिलता है, they even can't attend it. मतलब अगर उनके option पे है, अगर वो attend करना चाहते हैं तो करें, नहीं करना है तो नहीं करें. Then how was your overall experience? So I think if you're a ranker and you get an opportunity to attend MDP, I think करना चाहिए, because you get an opportunity to meet, मतलब सब rankers हैं तो they are the best of the best people, and you make friends throughout the country. मतलब अभी आप मुंबई में हो, आपका friend circle होगा related to मुंबई, थाने, but when you go to a program like MDP, you've got people from across the country, so you learn a lot, you see diverse people, you learn how to work in teams, you learn how to solve case studies. So it's an amazing experience. तो जो कॉलेज लाइफ मिस होती है वो MDP के 3 weeks में काफी हद तक कवर हो जाती है. So I think अगर ऑप्शन है तो बिल्कुल जाना चाहिए.
And now coming on the Marico part, Umang, Marico was something जो आपको MDP से मिला था या फिर आपने off campus try किया था? So that was an off-campus opportunity. Okay. So can you tell us more about that and Marico management training program, what it is all about? And काफी हमने आजकल सुना है companies management training programs offer करती है. What this is all about? So I think that the concept of management trainee is, they're looking for future leaders of the company. So to groom a future leader, you need to give them exposure of all the domains. So in a management trainee program, there'll be 4 or 5 stints. So for 2 months, you'll be in a sales role. For 2 months, you'll be in a marketing role. For 2 months, you'll be in a supply chain role. For 2 months, you'll be in a finance role. So that you get an exposure of all the industries, so that you are prepared to be the next CXOs of the company. So even in Marico, the sales stint was pretty amazing, wherein you actually go to the market and you visit the entire industry. You go from shop to shop, and you see how the products are being sold, the competitors' products, and how the entire supply chain dynamic works. So that is something which CA should definitely opt for if given an opportunity. So it gives you a diverse experience. Perspective. Yeah. That is not completely related to accounting or finance आप बैठ के कर रहे हो, but एक कंपनी का होलिस्टिक आपको एक एक्सपीरियंस मिल रहा है डिफरेंट एरियाज में क्या होता है. Perfect. Now being in Marico and having such a nice job, then आपने एकदम से Marico छोड़ के then you appeared for CAP. So how this decision came into your mind? Like ये factors क्या थे जो आपने decision लिया, नहीं यार अब तो MBA करना चाहिए मुझे और Marico को थोड़ा अभी रखना चाहिए. So I think for MBA there can be 2-3 reasons. So one of the main reason would be change of domain. So if you want to get into something like a front-end investment banking or a consulting, so generally front-end investment banking नहीं मिलता CAs को. So if you want to get into front-end investment banking, MBA is a good opportunity. And apart from the job perspective, in a B school, the grooming which you get, and more than the grooming, the network which you build, you've got like 500 odd people who are best of the best in their own domains. So as a CA, आपका interaction किसके साथ होगा? ज़्यादातर CAs के साथ होगा या finance team के साथ होगा. But when you do an MBA, you meet so many people, global students and people from all parts of the world, and there'll be engineers, there'll be lawyers, there'll be people from SRCC. So वो जो एक dynamics बनता है, वो जो एक network बनता है with people, I think that cannot be expressed in money. I mean, that is invaluable. So वो 2-3 aspects बहुत अच्छे हैं for an MBA. And apart from that, the college life and the events which they hold. So all these are intangible things, but as a whole, I think doing an MBA broadens your perspective and changes your way of looking at things. So आप MBA में जाते हो, केस स्टडी सॉल्व करते हो, तो CA का एक नैरो अप्रोच होता है. लाइक वी थिंक अबाउट द ICI स्टडी मटेरियल वे ऑफ थिंकिंग. मतलब हमारा सोच वैसा हो जाता है डूइंग अ CA. बट व्हेन यू गो टू एन MBA, हम सोचते हैं कि यार इसको सॉल्व करने का ये भी तरीका हो सकता है. सो यू विल गेट टू नो हाउ एन इंजीनियर थिंक्स, हाउ अ लॉयर विल अप्रोच द सेम प्रॉब्लम. So all those aspects, I think, help you groom as a person and become the best version of yourself. True, Umang. And even Umang, अभी इंडस्ट्री में काफी ट्रेंड देखा गया है, CAs काफी मूव कर रहे हैं MBA की तरफ. So what do you think, what is missing in a CA course जो कि स्टूडेंट को MBA ऑप्ट करना पड़ रहा है उस चीज को कवर करने की? I don't think anything, मतलब ऐसा CA course का वैल्यू कम नहीं है. I mean, CA course is very prestigious and highly regarded. But I think it being a correspondence course, the college life, the networking part and the soft skills part is completely missing in our CA course. So ICA is trying to bridge the gap by doing more stringent GMCS and the MDP thing. So I think with time, our institute will also evolve and learn from its past mistakes and try and match their level of education to those of the MBAs. But the entire problem stems from the fact that it is a correspondence course. Yeah. And Umang, one more question. This is something which I always wanted to ask you. If someone after CA is getting job opportunities in consulting, core consulting field or investment banking field, तो क्या उसके लिए MBA फिर relevant होता है या फिर उसको
उसको नहीं करना चाहिए एमबीए? I think if you are already getting into something like a BCG or a McKinsey, Yeah. probably doing an MBA is not really helpful for you, because even after the 2 years, you would end up in the same company. But then there are the other factors that, broadening your horizon, and Yeah. probably 2 साल college life enjoy करना है, networking करना है, नए लोगों से मिलना है. तो I think you should definitely go for an MBA. तो मन है तो कर लो एमबीए. मतलब इट्स एमबीए इज नॉट अ जॉब प्लेसमेंट एजेंसी की जॉब लेने को जाना है, Yeah. वैसा नहीं. इट्स लाइक एन एक्सपीरियंस. सो आई थिंक अगर वो एक्सपीरियंस को एंजॉय करना है तो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली डू इट. बट अगर इफ यू थिंक कि एमबीए इज जस्ट अ जॉब प्लेसमेंट एजेंसी या केवल जॉब जॉब के लिए जाना है, तो आई थिंक फिर आपके लिए नहीं है एमबीए. True, true, true. And even उमंग, there's a holistic development जो कि कॉलेज में होता है, वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक सीए के लिए, जो सीए पास आउट करते हैं और who has never went to a regular college or who has never went to a big four or something like top firms में, तो उनके लिए होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए एमबीए काफी हेल्प कर जाता है. राइट, ट्रू. सो वही वही फैक्टर्स. एंड इवन इन एमबीए सीएस का वैल्यू बहुत होता है. लाइक इफ यू सी इन माय बैच देयर विल बी लाइक 350 ऑड engineers and we are like 18 CAs. So वहाँ पे भी CAs को एक minority में होने की वजह से बहुत awesome job opportunities मिलती है. and CAs are regarded as the finance gods, and engineers मतलब so CA as a course is very prestigious. but वही है कि वो it being a correspondence course, there are some things lacking which an MBA fulfills. So CA with an MBA is an amazing option. If given an opportunity, I think everyone should do it. So that's all from my side, Umang. One more thing, if you like to add something for all the students जो अभी November 21 में पेपर देना चाहेंगे, कुछ ऐसा एडवाइस, कुछ ऐसा हैक जो आप कर लो, एग्जाम्स क्लियर हो जाएंगे. सो आई थिंक वही है कि एफर्ट पूरा मारो. अगर टाइम कम है, आपको लगता है कि नहीं यार अब तो कुछ नहीं हो सकता, लाइक फॉर द November 20 एग्जाम्स 2 odd months बचे हैं, डेढ़ महीना बचा है. सो आई थिंक वही है, एफर्ट पूरा मारो. एफर्ट पूरा मारो. एफर्ट पूरा, रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार मैंने मेहनत नहीं की. एंड इट इज जस्ट अ वन टाइम थिंग. यू वुड डेफिनेटली कम आउट ऑफ दिस फेस. ऐसा नहीं है कि पूरा जिंदगी भर ऐसा ही चलने वाला है. देयर विल बी टाइम्स व्हेन यू फील डीमोटिवेटेड, लगेगा कि यार बस हो गया, अब नहीं हो सकता. सो दैट इज द टाइम यू नीड टू calm yourself down, probably watch some motivational videos, talk to your parents, talk with friends, talk to seniors. So give up नहीं करना. तो ऐसा भी हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं जब लोग आखिरी एक महीने में एफर्ट डालते हैं एंड दे पास इन फर्स्ट अटेम्प्ट बोथ ग्रुप्स. सो ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग इज लॉस्ट. अभी भी इफ यू स्टार्ट आज से भी, यू गॉट लाइक पूरा 45 डेज के ऊपर है आपके पास टाइम. सो आई थिंक पूरा एफर्ट पूरा डालना चाहिए, जितना हो सकता है अपना 100% दे दो, तो कल को कोई रिग्रेट नहीं होगा कि आई डिडंट गिव माय बेस्ट. True, Umang. So Umang, one more thing, when you look behind your whole journey, so आपको कभी regret होता है कि rather than pursuing CA and CS, you would have directly went to like graduation के बाद सीधा आप MBA चले जाते, तो it would have been something like would have saved your 1 or 2 years. आई थिंक ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट एमबीए से व्हाट आई फाइंड इज वो मेच्योरिटी नहीं होती इन अ फ्रेशर. सो इन अ सीए यू डू 3 years ऑफ योर इंटर्नशिप. सो वो आर्टिकलशिप में आप दुनिया देख लेते हो. मतलब यू सी द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, हाउ थिंग्स वर्क. एज अ फ्रेशर व्हेन यू डू एन एमबीए, आप वो बच्चे के बच्चे रहते हो. मतलब यू हैवंट सीन द एक्चुअल वर्ल्ड, बाहर कैसा चलता है. सो व्हेन यू कम इनटू एन एमबीए विद वर्क you already seen how business works, you've already seen how corporate works, how the organization dynamic works. So I think थोड़ा work ex के बाद MBA करते हैं तो the learning which you gain from MBA would be more as compared to you being a fresher. मतलब fresher में वही होता है, बुक्स पढ़ते रहते हो, you don't see the larger picture of life जो एक work ex वाले को दिख जाता है. एंड इवन जो सीए से हम लर्निंग्स लेते हैं कहीं ना कहीं अकाउंटिंग, टैक्सेशन, और आफ्टर डूइंग एमबीए, वो एक होलिस्टिक जो नॉलेज होता है वो काफी हेल्प करता है लॉन्ग टर्म में. या एग्जैक्टली. सो सीए में वापस से वो विड्थ ब्रेथ वाला कंसेप्ट है. सीए में हम लोग एक चीज पूरा डेप्थ में पढ़ के आए हैं, लेकिन एन एमबीए यू स्टडी अदर कंसेप्ट एज वेल टू कवर द विड्थ. सो विड्थ और डेप्थ पूरा कवर हो जाता है बाय डूइंग एन एमबीए. So they are both complementary to each other. MBA and CA are both complementary to each other, and they form an amazing combination. True.
So now, Umang, we can shift onto the question part. I would request everyone to put up your questions in the question tab. आप comment पे भी आप questions लिख सकते हो, and now we will start taking up questions. Okay. Yeah. This is the first question, Umang. What are the opportunities CA plus MBA get, which a CA alone doesn't get? So as I said, something like a front-end investment banking or a private equity or even a consulting, which is not open to all the CAs. So in an MBA, if you do an MBA from a top B school, you'll definitely get into those domains. True. Next question is from Arashka. Is it important to read the institute material, or is it that class notes, etc., can be relied upon? I think institute का मटेरियल जितना ज़्यादा रेफर करोगे यू वुड टेंड टू स्कोर मोर सो वही है आई वुड सजेस्ट इंस्टीट्यूट का मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा रेफर करो इफ़ यू get stuck anywhere probably you can refer the class notes as a complement but the base material should definitely be of the ICIs. Yeah, true. इवन उमंग कहीं ना कहीं आपको ये भी रिलेट करना चाहिए कि जो आप जिस टीचर से कोचिंग्स ले रहे हो जो नोट्स है वो आपका मटेरियल पूरी तरीके से कवर करता है या नहीं. Right. If it covers everything then you can go with that material as well. True, वो तो है बट जितना हो सके आई थिंक ICI मटेरियल करना वुड बी दी वाइज थिंग टू डू. Yeah. There's one more question. During CA final leave period, how to manage revisions? This is something which is very relevant for right now. I think 3 to 4 revisions होने चाहिए during your CA final and वही है मतलब you should try to plan it well in advance and theory practical पकड़ के चलना है. You do one theory subject, one practical subject and I think वही summary you should when you're doing your first reading you should mark everything in your book like important points को underline and all करके रखना चाहिए. So I think that would help a lot in when you're doing the second revision आपको starting से scratch से नहीं करना. So that is one thing जो आपको important notes है important points है वो सब चीज लिख के रखनी चाहिए when you're doing your first revision so that second revision आपका 60% time में हो जाएगा as compared to your first revision. And someone is asking about mock test. आपने mock test भी दिया था उमा? Yeah, I think एक या दो series of mock test देना चाहिए so that would help you a lot. I think one complete series of mock test will gauge you to know how to actually do the paper in the वो 3 घंटे में बैठ के when you start with a blank sheet of paper and try to attempt everything scratch से तो वो 3 घंटे में time management and वो जो mental endurance चाहिए होता है you would get a good barometer of that in the mock tests. Yeah. Umang, there's a question. This is very relevant, I guess. If someone doesn't get good experience in articleship and ends up with a rank or good marks in CA final, so job में issues आती है या फिर मतलब how was your job interview? वहाँ से आप relate करके बता सकते हो. So I think job interview में first criteria would be a CA final rank. So if you got a CA final rank तो sorted है तो बाकी कुछ नहीं होगा मतलब CA final rank ऐसी चीज है आप रैंक लिया फाइनल के आपके आज तक के सारे पाप धुल जाएंगे आपने IPCC में जो किया है CPT में जो किया है मतलब जो भी आपने बचपन में मजा किया है आपकी परसेंटेज कम है आपको IPCC में अटेम्प्ट है CPT में आपके अच्छा स्कोर नहीं है तो वो सब साफ हो जाएगा. सो CA फाइनल रैंक ऐसा चीज है आपके आज तक के सारे पाप धुल जाएंगे. If you don't have a CA final rank, having a Big Four article chip or an industrial training from a big firm would help. So I think these are the few factors which are looked at a job interview, and the next criteria would be a first attempt. So I think if I had to rank it, first would be CA final rank, second would be first attempt, and third would be your article chip or the industrial training. So यहाँ पे आप क्रोनोलॉजी में देखेंगे तो क्रोनोलॉजी में आर्टिकल चिप थर्ड नंबर पे आता है तो you should first you can't sacrifice your CA final attempt or your CA final rank just because Big Four में जाना है. तो Big Four में जाओगे Big Four की में जाओगे बट एट व्हाट कॉस्ट तो आपका रैंक सैक्रिफाइस नहीं होना चाहिए. सो फर्स्टली आपको रैंक के ऊपर एम करना चाहिए एंड देन आर्टिकल चिप मैटर करता है. सो वो बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है आर्टिकल चिप एंड CA फाइनल स्टडीज के बीच में. There's a question from Sarthak.
is this a good decision joining MBA without a corporate experience? So as I said, अगर वर्केक्स के साथ जाते हो तो you understand things better, but it's not a make or break. Even if you don't have workex, you are good to go. आपने कोई internship किया होगा 3-4 महीने का, so that is good enough. And you should try, and when you go for an MBA, you should try to learn a lot from your peers, from your peers who have actually worked in different industries. So आपको उनसे पूछना चाहिए कि आप वहाँ भैया, आप भैया नहीं, आप वहाँ क्या काम करते थे. So what were your insights from that particular industry? So peer-to-peer learning is the most important thing in an MBA. So as a fresher, you should try to network a lot with people and learn from their experiences. Try to know the nitty-gritties of different industries. Even we see a lot of engineers जो कि just after their college they enter MBA. So काफी लोग होते हैं जो without corporate experience also they do well. And it's not a make or break. Even as a fresher, you would have an amazing experience. Yeah. There's a question from Pavitra. What skills of a CA comes in handy while pursuing and further getting placed as an MBA? So CA and finance का direct nexus होता है. So when you sit for a MBA placements, probably when you go for a PE or an investment banking job, CAs are the first ones to be shortlisted. So as a CA, आपका shortlisting बहुत easy हो जाता है because there is a direct nexus between an investment banking and CA का finance. Vis-a-vis investment banking and engineers, मतलब engineering and investment banking are two separate things, but finance and investment banking का nexus बहुत अच्छा होता है. And even in the curriculum, there are a lot of subjects based on economics, taxation, accounts. So CAs have a hands-on knowledge there, so we do get an upper hand. And more than that, there's the diversity factor, and there are around 20 to 25 CAs in every B school versus 300 to 400 engineers. So I think वो minority factor से भी shortlisting and job placements become very easy. And even among we see a lot of MBAs जो या फिर CAs भी जो MBAs start करते हैं वो फर्स्ट अपने सेमेस्टर में CFA की तरफ जाना पसंद करते हैं. CFA level 1 क्लियर कर लेते हैं कि उनको एक जॉब मार्केट में एज मिले to get shortlisted in all those IB companies. So being a CA, whether that clearing CFA level 1 or level 2 is preferable or CA सिर्फ चल जाता है. CA I think works. CA also works, but अगर opportunity है तो L1 L2 दे सकते हो, because clearing CFA L1 becomes relatively easier for a CA. मतलब अपना SFM का ही most of the portion है. So I've seen a lot of CAs who study things for 1 week and clear a level 1. So I think if given an opportunity कर लेना चाहिए, but नहीं किया तो it's not a make or break. And as a CA, you'll easily get all the investment banking shortlists in a B school. Oh, okay. There's a question from Ashay. How difficult is it to switch study pattern to suit from CA finals hard work to CAT's agility? So I think CA exam and CAT are two different ball games altogether. Wherein CA में you require to know everything in depth. CAT में the speed is all that matters. So CAT में you need to select the right questions and you need to be dynamic. अगर ये question नहीं हो रहा मुझसे, so you should have the presence of mind to leave this question and move on to a new one. The strategy plays a more important role in the CAT exam. You just have to know which questions to attempt and which all you can skip. So I think presence of mind, dynamism or sharpness of mind बहुत ज़्यादा चाहिए in CAT, whereas in CA it's more about learning a host of topics, learning all the big thick books, whereas in CAT it is more about your IQ, your presence of mind and your stress handling capability. And did you prepare for MBA like CAT के लिए आपने कितने months का preparation किया था, and whether CA का जो आपने preparation phase सब कुछ help हुआ था CAT में या फिर it was completely a new game? So I prepared for CAT for around 1.5 to 2 months. So CA का the only advantage which a CA gets is हमें आदत है 13-14 घंटे पढ़ने की. So we can sit and study for like 14-15 hours or probably 13-14 hours every day. So I think the endurance and the mental stamina which a CA has, that helps a lot in the CAT preparation. And one more question जो मुझे लगता है I forget to mention, जो CAs को IIM Bangalore में edge मिलता है,
वो आप उमंग बताना चाहो एक बार हमारे ऑडियंस को. सो आई थिंक सीएस को डेफिनेटली हर जगह पे हर एक बी स्कूल में एज मिलता है ड्यू टू द डाइवर्सिटी कोटा बिकॉज एमबीए इज Yeah. जनरली डोमिनेटेड बाय इंजीनियर्स सो any non-engineer would have a higher chance of getting selected even at a comparatively lower percentile. And even at Yeah. IIM Bangalore, they have this special criteria wherein they would give a call to all the top 10 CA rank holders if they cross a bare minimum threshold in the CAT percentile. So as I had a third rank in CA final, things became relatively more easy for me to get into IIM Bangalore. So IIM Bangalore is considered as the most CA friendly B school as compared to all the other B schools. And is it something जो बाकी AIMS भी offer करते हैं, या this is specifically IIM Bangalore offers This this is only top for 10? IIM Bangalore. This is only for IIM Bangalore. Okay. And this is only for CAs, or this is relevant for CS, CMA? So yeah, three categories are covered. That is CAs, Yeah. CS, and CMA. All three of them are covered. Okay. Top 10 rankers from all the three Yeah, courses. yeah. Okay. That's great. तो काफी लोगों को ये चीजें पता नहीं होती उमंग, और this is something which is very relevant for all the students. And even in the MBA, even in most of the B schools, having a CA final rank helps. So if you have a Yeah. CA final rank, you get a call even at a lower CAT percentile. So यहाँ पे भी a CA final rank would help. So I think the overarching advice to a CA student would be try and get a rank in CA final. That would open a lot of doors for you. Okay. There's another question from someone. How you manage your job and preparing CAT? So for me, I'd taken a break after my articleship. I had not joined Marico until my CAT exam. So for 2 months, I was pretty much devoted to CAT, and I did not have any full-time job at that point of time. So I could devote all my time towards my CAT preparation. Okay. So you were very much planned उमंग पहले से कि you have to go for an MBA. Yeah, I mean, मन तो था कि करना है because Yeah. the exposure which you get in an MBA, the networking and the overall grooming and the change in the way of thinking, the broadening of horizon which an MBA gives you, I think that is still lacking in a CA. I mean, CA may we have a habit of having blinkers and thinking in only one direction, only in the True. ICI study material way of thinking. मतलब एक प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है तो we would just think कि ICI कैसे सॉल्व करता है, हम वो याद रखेंगे and we'll just solve by that method. We've stopped applying brains and we don't look at different ways of solving a particular problem. So an MBA helps you to broaden your horizon and helps you to see life differently, approach same problem in 10 different ways. True. There's another question from Manan. Mental health during last time of preparation. I think mental health is most important thing. Leave alone preparation. I think in life, mental health is the most important thing. If your mental health, if you don't feel good, whatever you do is all a waste. If you're not happy at heart, I think all of the entire preparation and the CA degree and everything is secondary. So I think mental health is primary, and you should not overstress yourself. Probably you can do some meditation or even physical exercise would help, or probably reach out to your friends. And there are times when you have to vent out frustration. So कोई senior से बात कर लो who have already been in the same boat, या कोई अपने parents से Yeah. बात कर लो. They would definitely help you to vent out the frustration and help you come back to peace. And even motivational videos देख लो कोई. So बहुत सारे resources हैं YouTube पे. I think you can probably utilize those as well. And what were 2-3 things जो कि आप उमंग follow करते थे during your CA final preparatory? So I think for me, meditation helped a lot. So I used whenever I was very frustrated or whenever I was very depressed, I used to meditate. I used to watch some motivational videos, probably Okay. motivational videos में संदीप महेश्वरी देख लेते. There are a lot of stuff. Probably CA faculties का भी motivational video है. एक दो भंवर बोराना सर का videos है. So those Yeah. help a lot to get back into the study groove. Okay. Next question is, yeah, your learnings from your CA journey.
So I think Now, the yeah. one learning would be never give up. मतलब आपको लगता है कि आप कुछ नहीं हो सकता, that is the time if you continue things will start to improve. So I think this is one quality which CA gave me, would be perseverance. तो this is something जो सीए स्टूडेंट्स काफी अच्छे से सीख जाते हैं, पेशेंस और सिटिंग फॉर लॉन्ग आवर्स और Completely. आई थिंक Keshav is asking, what are the opportunities for an MBA grad except IBP consulting strategy roles for CA folks? So apart from investment banking or consulting, you can get into general management. So there are the leadership programs of many companies, like all the big FMCG companies like the HULs, PNGs, Reckitt Benckiser. Then you can get into product management in a company like a Amazon or a Google, or probably you can get into marketing. Even marketing is something which a lot of people love to do. So Yeah. so these are the some opportunities which MBA can get. So as an MBA, you the number of opportunities which you get, there are 6 7 domains, and you as a CA, you can get into either of them. And there's no बैरियर पर से कि आप फाइनेंस से हो, आप सीए हो तो आप प्रॉडमैन में नहीं जा सकते या आप मार्केटिंग में नहीं जा सकते. सो आई थिंक एवरीथिंग इज ओपन, स्काई इज द लिमिट. Everything starts from zero now in MBA college. या I think that's all from the question side. We have almost covered all the relevant questions. So, Umang, any last advice, tips, suggestions for all the CA students who are watching this session, or for everyone who later on even watch this session? So I think मतलब वही है, if you're a CA final student and having exams in November, and if you're feeling कि यार अब तो कुछ नहीं हो सकता, and you'll be having the feeling of guilt कि यार मैंने इतना time waste कर दिया, मेरे को पहले से पढ़ना चाहिए था. तो I think it's no point looking back at things. अभी भी भाई 45 days है, effort मारो, I mean give your best, तो हो जाएगा. Things will start to improve and you won't even get to know. And looking back you will think कि यार मैंने 45 दिन में 2 ग्रुप निकाल लिए. I mean that is something you will be proud of for the rest of your life. So that's all, Umang. Thank you so much for coming. Yeah, And thank you so much, guys, for joining this session. That's all for today. Thank you.